Hello students, good morning. In economics lesson number 5 cost of production and concept of revenue में today we will learn average fixed cost. हम लोग last time total fixed cost, total variable cost and total cost तीनों को पढ़ें. आज एवरेज फिक्स कॉस्ट पढ़ेंगे. सरेराश स्थिर खर्च. Average fixed cost is the cost of per unit of output by dividing total fixed cost of a firm with production unit we get average fixed cost. In formula, average fixed cost is equal to total fixed cost upon total production unit. मतलब सरेराश स्थिर खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च अपन टोटल प्रोडक्शन यूनिट बराबर कितना यूनिट प्रोडक्ट हुआ है वो. AFC इज इक्वल टू TFC अपन TP बराबर टोटल प्रोडक्शन. AFC इज इक्वल मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट, TFC टोटल फिक्स कॉस्ट and TP total production. Let us try to understand with an example. For example, one company total fixed cost is rupees 50,000 and producer produces 1,000 units of commodity then. Okay, so average fixed cost is rupees 50,000 upon 1,000 is equal to 50 rupees is a average fixed cost. When production increases, the total fixed cost is distributed among more units. With the increase in the production, average fixed cost decreases and therefore average fixed cost curve is a downward sloping curve. In schedule and diagram, relation between production and average fixed cost is shown. In the table, output units, total fixed cost and total fixed average fixed cost in rupees. आउटपुट टोटल फिक्स कॉस्ट हमको पता है कि सेम रहेगा, 100 है इधर दिया गया. फॉर एग्जाम्पल आउटपुट 10 यूनिट्स, 100 फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट 10 रुपीज़. फिर एवरेज आउटपुट 20, फिक्स कॉस्ट 100 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 5 रुपीज़. वैसे ही 30 पे 100 एंड 3.3, फिर 40 पे 2.5, 50 पे 2. In the diagram, you can see the diagram of average fixed cost. Y-axis पे average fixed cost in rupees and x-axis पे output units in units. Okay, the average fixed cost curve okay, देखो 10 आउटपुट्स 10 है, 10 यूनिट्स तो फिक्स कॉस्ट 100 है तो उसके सामने एवरेज कॉस्ट भी 10 रहेगा. 20 यूनिट्स आउटपुट्स हुआ. बी पॉइंट पे 5 रुपीज़ एवरेज फिक्स कॉस्ट हुआ. वैसे 30, 40, 50 पे हम लोग ने ए शेड्यूल में भी दिखाया गया है. तो ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट
So in the diagram 5.4, it is shown that as output increases, average fixed cost decreases. On OX axis, output units is shown, and the OY axis, average fixed cost in the rupees, is shown. Average fixed cost decreases in the output increases. It means that average fixed cost curve is having left in the right upward and downward slopes. Average fixed cost decreases but it never become zero. Okay, average fixed cost कभी जीरो नहीं होता, मतलब cost decreases, कम होता है लेकिन जीरो नहीं होता. Okay, now average variable cost, सरेराश अस्थिर खर्च. Total variable cost of a firm divided by the total units produced, we get average variable cost. Average variable cost is the variable cost per unit of output. Okay, जो इसमें है, जैसे कि हम लोग ने फिक्स्ड कॉस्ट पर है तो उसमें आउटपुट्स टोटल फिक्स कॉस्ट था, तो फिक्स कॉस्ट की जगह पे वेरिएबल कॉस्ट, एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट की जगह पे एवरेज variable cost. So this concept is useful in the taking a decision regarding continuing production, increase production, or closing down. To find out this cost, formula is on page number 52. Average variable cost is equal to total variable cost upon total production units of production. AVC is equal to TVC upon TP. AVC मतलब average variable cost, TVC total variable cost, and TP total production. For example, suppose firm's total big variable cost is rupees 150 and the firm produce 20 unit of output, then average variable cost is equal to 150 upon 20 is equal to 7.5 is the average variable cost. Okay, as output increase, average variable cost also increase. Initially with the increase in the production, average variable cost decrease. शुरुआत में वो इंक्रीजिंग होता है प्रोडक्शन, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज. देन it becomes minimum, and after that with the increase in the production, average variable cost also increase. It means it has relation with the volume of production. This can be understood with the help of table and diagram. First of all, table, output units, total variable cost TVC, average variable cost AVC in rupees. Output 10 rupees, 10 unit मतलब प्रोडक्शन, तो TVC कितना है 80, एंड वेरिएबल कितना हुआ तो 8 रुपीज़. ओके, मतलब 80 अपन 10 इज इक्वल टू 8. वैसे ही 20 यूनिट्स प्रोडक्शन पे 150 तो इज इक्वल टू 75 इज अ वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. वैसे ही 30, 40, 50, 16, 70 आउटपुट पे, एंड वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग है, स्थिर खर्च है तो वो अलग अलग रहेगा. सो उसके टोटल TVC के हिसाब से AVC भी बनेगा. ओके, यू कैन सी द डायग्राम of the average variable cost. X-axis production and Y-axis average variable cost in rupees. When 10 rupees, A point पे 88 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है. वैसे ही अलग अलग प्रोडक्शन के सामने वेरिएबल कॉस्ट अलग है. BCDEFG पॉइंट पे दिया गया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. ओके, in diagram 5.5, output is shown in the x-axis and AVC is on y-axis. Here in the diagram, first average variable cost move left to right, upward to down
word means negative slope curve, which indicates that in the beginning as output increase average variable cost and decrease, but after the production of 30 units, 30 यूनिट के प्रोडक्शन के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एन इंक्रीज ट्रेंड्स because in the beginning increasing return to scale and afterward decreasing return to scale low may apply. Okay, now average cost, सरेराश खर्च. Average cost is also known as average total cost. Okay, average cost is per unit of production. Average cost is found by dividing total cost by the units of the production. Okay, total cost is sum of total fixed cost and total variable cost. Okay, स्थिर और अस्थिर खर्च का total fixed cost variable cost. Therefore total fixed cost plus total variable cost is divided by production unit. We get average cost. Okay, average cost is equal to total cost upon total production unit of production, or एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल. मतलब ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल मिक्स कॉस्ट जो हम लोग ने पढ़े ना, इसमें टोटल कॉस्ट पहले फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. तो इज इक्वल ए सी मतलब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टी सी टोटल कॉस्ट अपन टी पी टोटल प्रोडक्शन, in which AC average cost, TC total cost, TP total cost, total production, sorry, and example trends of the firm are below. Production in unit P, total cost in rupees TC and average cost in rupees AC. मतलब 1 यूनिट प्रोडक्शन 9 TC है तो 9 रुपीज़ एवरेज कॉस्ट हुआ. ओके, वैसे ही 2 तो 16 मतलब टोटल 16 अपन 2 इज इक्वल टू 8, 3 पे 21 7, 4 28 7, 5 यूनिट्स 40 टोटल कॉस्ट 8 रुपीज़ एवरेज कॉस्ट. ऐसे 6 7 6 पे 40 54 9 एवरेज कॉस्ट. 7 प्रोडक्शन पे 70 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है तो 10 रुपीज़ एवरेज कॉस्ट होगा. ओके, एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज द टोटल कॉस्ट राइजेज but initially the average cost falls then remains constant and subsequently rises. If such a trend of average cost is plotted, the following diagram is obtained. देखो, you can see the diagram of the average total cost ATC oblique AC मतलब average total cost या average cost. In diagram 5.6, on x-axis output and y-axis average cost is shown in the beginning with the increase in the output. Average cost increase after some units of the production unit increase in the average variable cost is more in the comparison to decrease in the average fixed cost, and due to that total cost increases and average cost curve become U shape. In short, initially with an increase in the production the average cost decrease. मतलब शुरुआत में initially it with the increase in the production then average cost decrease, then at a particular level of production it is minimum, but after that the increase with an increase in the production, therefore average cost curve become U shape. इसी वजह से average cost curve U shape का है. You can see in the
diagram, average cost curve. Okay, understand?